Greeting dear students. I hope all of you have understood the previous topics. In this module, we will discuss about the trends in the modern periodic table. We are studying the topic or chapter, the periodic classification of elements. And we are, in the last module, we discussed about the modern periodic table. And during that topic, we discussed modern periodic law. And the definition of modern periodic law is the properties of elements are the periodic function of their atomic number. Whenever, even from the starting of this chapter, we are discussing the periodic word again and again. The periodic means the properties of elements are periodic function of their atomic number. एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर यू विल फाइंड ए एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस एलिमेंट. कि एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ क्या करती होगी? मैच करती होगी. So during the modern periodic table we discussed that there are 18 group in the modern periodic table and 7 periods in the modern periodic table. 18 group and 7 periods. So the meaning of groups is, group mean what? The elements having similar chemical properties are arranged in a group. कि जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है उसको हम एक ग्रुप में रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 alkali metal, all are alkali metal. Group 2 alkaline earth metal which are present in the earth crust. Similarly the halogens in case of non-metal, they all involved in the salt formation. So what is the reason behind the similarity in the chemical property? We discussed the reason behind this is the similar outer electronic configuration. So we will discuss few of the properties, the trends of few of the properties that exist in the modern periodic table. So the first property that we will discuss is valency. Here I have not written any kind of definition related to the valency because all of you are aware what is valency and how we can calculate the valency of an element. So what is the meaning of valency? The combining capacity of element. कि एक element कितने element के साथ combine कर सकता है. That is the different manner कि whether it is forming the ionic bond or covalent bond के element की combining capacity कितनी है, that is called valency. And to calculate the valency, first we should know how to write the electronic configuration. की valency निकालनी है तो हमको क्या पता होना चाहिए? How we can write the electronic configuration. And all of you are aware about the method to write the electronic configuration. तो अगर आपको electronic configuration अच्छे से लिखनी आती है, you can easily calculate the valency. So by writing the electronic configuration you will find out the number of valence electron. आपको valence electron का पता चल जाएगा. If the number of valence electrons are 1, 2, 3 and 4 then the valency will be equal to the number of valence electron. कि अगर लार्ज सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है या 4 है, that will be the valency जो होगी equal to the number of valence electron. अगर वो 4 से ज्यादा है then we generally what we do 8 minus number of valence electron. अगर किसी की जैसे for example you can see here the number of valence electron in case of nitrogen is 5. Why? What is the atomic number of nitrogen? 7. The electronic configuration is 2, 5. तो लास्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमको 8 में से माइनस करने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 8 minus 5, 3. So all of you are aware about the method how we can calculate the valency of elements. Now what is the trend of valency in the modern periodic table? So whenever we are discussing about the trend, we will discuss the trend in two manner. First is in a group, कि किसी भी ग्रुप में from top to bottom, not from bottom to top. कि जब भी हम ट्रेंड की बात करेंगे, the question is there, write the trend of valency in a group in modern periodic table. So group means moving from top to bottom. For example, look here, I took the example of a group 1. Alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. If you want to write one more, you can write francium, Fr. If I write the electronic, here I have directly written the valence electrons. But if you want to know how this valence electron can be find out, let's take the example of sodium. All of you are aware about the atomic number of sodium, which is 11. If I write the electronic configuration 2A1. In case of sodium, similarly, if you write the lithium 2,1. So here I have written the two examples of first group, lithium and sodium. When you see it carefully, in the valence shell of lithium, how many valence electrons? 1.
In the valence shell of sodium, how many valence electron? 1. So in case of group 1, all the electrons will be, all the elements will be having 1 electron in their last shell. So I have directly written the valence electron in lithium 1, sodium 1, potassium 1, rubidium 1, cesium 1, francium 1. And if the number of valence electron are 1, 2, 3 and 4, that will be the valency of electron. तो कितने हैं इसके अंदर? 1 इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर लास्ट सेल में, तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी? 1. Now what is the meaning of trend? When you are moving from top to bottom in a group, you can see here valency of 1, 1, 1, 1. So there is no change in the valency when you move in a group from top to bottom. So this is the trend. How or why? You can write this example. If in exam you get a question explain why the valency do not get changed when moving from top to bottom, then you can write this example. You can took any of the group, either 2, 4, 5, similarly to this. Next is the whenever trend is asked, it is generally asked in either in the group. If they ask to write the trend in modern periodic table, in that case you have to write both the trend in the group, in a period. So second is in a period. Period mean all of you are aware about the modern periodic table. There are 7 periods. So in a period when you move from left to right, so in case of group you have to write the trend from top to bottom, in a period from left to right. Here I have took the example of second period: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Atomic number of lithium 3, beryllium 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Number of valence electron you can find out by writing the electronic configuration. For example, carbon atomic number 6. So when you write the electronic configuration 2, 4. So how many valence electron I have written? 4. Similarly in nitrogen last shell electron 5. In fluorine last shell electron 7. I have already discussed okay, how we can calculate the valency. If the number of valence shell electron are 1, 2, 3 and 4, then the valency is equal to number of valence electron. If it is more than 4, then 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7. So this is a period in a modern periodic table. Now you can look for the trend on yourself. Look here, valency first increases from 1, 2, 3, 4. Then it will start to decrease from 3, 2, 1 and 0. This is what I have written here. From left to right, valency first increases from 1 to 4, that generally up to the group 14, then decreases to 0. So I hope the trend in modern periodic table related to the valency is clear to everyone. Now the most important trend, that is about the atomic size, because the further trend that we will discuss in the next few modules कि metallic नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सब आपको तभी समझ में आएंगे when everything is clear related to the atomic size. Atomic size, what is the meaning of atomic size? Let's assume this is an atom. This is the nucleus, K shell, L shell, and this is the last shell. Let's assume one electron is present in the last shell. So the distance between the center of nucleus and the outermost shell is called atomic size. Means you can write the atomic radius. The most proper term to find out the size of the atom means we have to calculate the atomic radius. Now what will be the trend of atomic size? कि atom का size increase होगा, decrease होगा when you move down a group. I took the example of first group: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Atomic number of lithium is 3, atomic number of sodium is 11, potassium 19, rubidium 37, cesium 55, francium 87. So when in case of size, for example, everything is related directly or indirectly to the electronic configuration. If I write the electronic configuration of lithium, you can see here 2, 1. Lithium से sodium पे जा रहा हूँ, second element है 2, 8, 1. Similarly to the potassium, if I write here potassium 2, 8, 8, 1. So now if you count the number of shells, in case of lithium how many? 2. In case of sodium 1, 2, 3. In case of potassium 1, 2, 3, 4. So here I have written, when you write the electronic configuration, how many shells will be there. In case of lithium
2, in case of sodium 3, in case of potassium 4, in case of rubidium 5, in case of cesium 6, in case of francium it is 7. So one of the method to write the number of shell is by writing the electronic configuration, but one of the indirect method is if you know about their period. Lithium is in the second period, sodium is in the third period, so how many shell? 3. Lithium in second period, how many shell? 2. Potassium in fourth period, how many shell? 4. So you can also find out by knowing their period number. So now what is the meaning of trend of atomic size in a group? अब आप खुद देख रहे हो in case of lithium, if I draw a rough structure, in case of lithium, this is the nucleus, how many shell? 1, 2. In case of sodium, how many shell? 3. Nucleus K, L and M. Similarly, in case of potassium, how many? 4. Nucleus 1, 2, 3, 4. So it is obvious from this description that when you move down a group, there will be increase in size. कि atomic size जो होता है, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. रीजन क्या है? इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम हियर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. कि जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो द एटॉमिक साइज विल इंक्रीज. वो क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल. क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, साइज क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में. तो अब एक एक शेल इंक्रीज होती जा रही है, तो न्यूक्लियस के बीच में और आउटर शेल के बीच में डिस्टेंस क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. और यू कैन राइट द एटॉमिक रेडियस increases when you move down a group, and the reason is clear to everyone. Due to increase in number of shell, the distance between the nucleus and the outermost shell increases. So I hope, because this atomic size is the most important trend, because आगे आने वाले जितने भी ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर सब जगह पे हम एटॉमिक साइज को एज ए रीजन यूज करने वाले हैं. तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. So atomic size when you move down a group increases. Why it increases? Due to increase in number of shells. Now move to the second trend. What will be the trend of atomic size in a period? Now you can look here. I took the example of second period: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. You can look here, atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can write the electronic configuration of these elements. All of you are aware. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. In each and every case, how many shells are present? Only 2 shells are present. Okay. So let me. Only 2 shells are present. Now we'll explain similar to this pattern. अब हर एक के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है और 2 शेल है. तो इस वाले रीजन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था? इनका साइज चेंज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर एक के अंदर क्या है? ईच वन इज हैविंग 2 शेल. बट व्हेन यू सी इट, आई एम डिक्रीजिंग द साइज. देयर इज ए डिक्रीज इन साइज. वो साइज डिक्रीज क्यों हो जाता है? लिसन केयरफुली. Let's assume my hand is the nucleus and this is the last shell. अब हर एक के अंदर कितनी शेल है? 2 शेल है and this is the nucleus. अब शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही तो अट्रैक्ट करेगा ना. न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और वो क्या कर रहा है? लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. लेट अज्यूम दिस मार्कर इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? कि शेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितनी है. अब इसके केस में, हर एक केस में 2 ही शेल प्रेजेंट है. ठीक है. तो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, वो मान लो यहाँ पे लास्ट शेल है, उसको अट्रैक्ट करना है. ठीक है. क्यों अट्रैक्ट होते हैं वो? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट. अब हो क्या रहा है? व्हेन यू सी इट केयरफुली, when you move from left to right in a period, there is a increase in atomic number. Atomic number क्या होता जा रहा है? Increase होता जा रहा है. And what is the meaning of atomic number? The number of proton present in the nucleus of atom. तो मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीजेस. और प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है
तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो लार्ज शेल में उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएंगे। एंड जब लार्ज शेल थोड़ी न्यूक्लियस के पास में आ जाएगी तो एज यू कैन सी पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, धीरे धीरे वो क्या हो रही है, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो लास्ट शेल जो है वो थोड़ा थोड़ा पास आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन for this trend कि when we move from left to right in a period the atomic size decreases. The reason is because the number of shell remains same but due to the increase in atomic number extra proton is added into the nucleus की 1 से 2 3 4 ऐसे जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। Due to increase in number of proton there will be increase in nuclear charge। nuclear charge मतलब पॉजिटिव चार्ज है, वो लार्ज सेल को अट्रैक्ट करने वाला है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है लार्ज सेल में दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस और वो न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। सो आई होप दीज टू ट्रेंड्स आर क्लियर टू एवरीवन। वैलेंसी, नाउ आई विल कंक्लूड। इन ए ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम, इन ए पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 4 and then decreases to 0. About the atomic size, in a group atomic size increases due to increase in number of shells. In a period atomic size decreases. You can directly write if question is of only 1 mark due to increase in nuclear charge. A proper term is due to increase in effective nuclear charge and the number of shells. If the question is of 2 or 3 marks, then you can write everything. So I hope these two trends are clear to everyone. If you still have any doubt related to these two trends, you can ask in the comment section. Now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.